Hello everyone, how are you? I think that by the mercy of our owner, you will be happy and healthy. I am also well. Thank you very much. आज मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद इफ्तिखार खान फिर आज इंग्लिश बोलने का अलग स्किल और ट्रिक लेकर आया हूँ। हम लोगों में बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं जिनके घर में कोई ऐसा मेंबर नहीं मिलता है कि हम उसके साथ इंग्लिश थोड़ी देर बोलें और उसको प्रैक्टिस करें, या हमारे फ्रेंड्स में भी ऐसे नहीं मिलते हैं, या है भी तो बिजी है, वो वक्त नहीं दे पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, या हमारे नेबरहुड में भी नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मतलब शॉर्टकट वो फार्मूला है कि हम लोग सेल्फ डिबेट करें। सेल्फ डिबेट अगर हम करते हैं तो उससे भी हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आईना के सामने, मिरर के सामने हम जाकर इंग्लिश बोलेंगे और उसको देखेंगे कि हमारी जो है पर्सनालिटी कैसी हो रही है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है। उस तरह करके भी हम अपने इंग्लिश को बोल करके, स्पीकिंग करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं लाया हूँ कि सेल्फ डिबेट करके हम लोग कैसे अपनी इंग्लिश को जो है इम्प्रूव करें और उसको एनलार्ज करें, बूस्ट करें। तो सेल्फ डिबेट ये होता है, जैसे मैं आप लोगों के सामने एक ये बुक लाया हूँ। ये दो बुक हैं, ये फ्लावर्स बुक हैं। इसमें हम लोग अगर देखते हैं, ये फ्लावर्स बुक हैं, तो इसको हम देखकर कहेंगे कि ये गुलाब है। अभी मैं हिंदी में डिबेट कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको सुनिए। उसके बाद बाय द मर्सी ऑफ आवर ऑनर आई कैन डिबेट इन इंग्लिश। यह गुलाब है, यह एक सुंदर फूल है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गुलाब जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह फूल अच्छा नहीं है और ये फल अच्छा है। दूसरे टीम का होगा कि वो ले लेंगे एप्पल और एप्पल की तरफ से बोलेंगे कि एप्पल एक बहुत ही अच्छा फल है, यह ऐसा अच्छा फल है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है एक फल सेब सुबह में अगर खाता है तो दिन भर या अपने जीवन में बार बार वो जो है हेल्दी रह सकता है। इसी तरह करके हम लोग जो है फल और यानी फ्लावर और फ्रूट पर डिबेट कर सकते हैं। उसका मैं प्रैक्टिस अभी आपको कर रहा हूँ यहाँ पर। Now I am going to speak in English. Please listen to me and look at this picture. There are two picture here and there are two picture here. First of all, suppose that my topic is bicycle and I want to speak about a bicycle. And first of all, I want to say that this is a bicycle and it has two wheels, so it is very useful for us. And how can you say that my bicycle is not useful for everybody? Please speak ahead. दूसरा टीम बोलेगा my topic is rickshaw. Rickshaw is very beautiful thing and it has three wheels and we can sit a lot of people on this rickshaw, so I can say that my rickshaw is better than your bicycle. Another student can speak that my bicycle is very useful for farmers, my school is very useful for girls, my school is very useful for students, my school is very useful for teachers, my school is very useful for exercise also. So I can say that my bicycle is superior to you and superior to your rickshaw. And how can you say that my bicycle is not superior? Please speak ahead. Again, second team can speak that my rickshaw is very useful. I can earn money with the help of rickshaw. I can make seat some passengers and I can take that passenger from one place to another place. Thereafter I can earn money. So rickshaw is the source of money. And how can you say that rickshaw is not superior to bicycle? In this way you can say that my bicycle has a handle and two pedals and a beautiful frame. In this way I can say that my bicycle is superior to your rickshaw. And why can you say that your rickshaw is superior to my bicycle? Again, another team can say, no, if you riding your bicycle on the road and it is raining, you can wet yourself. But
When you are pulling a rickshaw, your passenger cannot wait. Your passenger will be safety. So I can say that my rickshaw is better than your bicycle. And how can you say that your bicycle superior to my rickshaw? Again, first person can say that my bicycle run very fast on the road, and it is light in villages, it is light in town. So I can say that my bicycle is very important. And how can you say that my bicycle is not important? Again, we can change other topic. Suppose that there are two students, and first students are saying that my topic is Hero Honda, and the second student can say that my topic is a scooter. In this way, I can say that my Hero Honda is very useful because it run very fast, and we can sit two person and we can go from one place to another place. So I can say that my Hero Honda is superior to your scooter. And how can you say that your scooter is superior to my Hero Honda? Again, the second person can say that a scooter is very beautiful bike, and it is a very beautiful wheel. It is the very nice thing. So I can say that my scooter is better than your bike. And how can you say that your bike is better? So in this way, we can practice sometime on bicycle, on rickshaw. Sometime we can practice on a scooter, and thereafter we can talk on this bike. In this way, we can practice ourselves, and we can boost our English knowledge. We can develop our debate skill. We can develop our English discuss skill. इस तरह जो है हम लोग खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके हम अपने इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि हम ट्रांसलेशन जाने, ग्रामर जाने, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं किसी से डिबेट करना, किसी से डिस्कस करना, that time our English is incomplete. So we have to know how to debate. We have to know how to fight in English with junior person, with senior person, with Indian, and with foreigner also. In this way, it is my nice skill, and it is my nice advice to all my viewers that you have to also practice with the help of this type of things, and thereafter you can boost your English discuss debate, and you can boost your knowledge. Now I don't want to speak more. Thank you very much, because you have listened and you have watched me for some time. Thank you very much for this watching. We can see again in next video.